Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. How are you all? Let me know in the comment section if good, not good, why. I'll definitely try to help you out. Alright? So as you all know, on this channel, I share with you all my own notes so that you get an idea how to make notes on different subjects जो कि both prelims और mains perspective से बहुत ही important हैं. अगर आप मेरे नोट से गाइडेंस लेके अपने नोट्स बनाते हैं तो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू रिवाइज इट इन द लास्ट मोमेंट. आपको रिवाइज करने में, मेमोराइज करने में बहुत ही आसान हो जाएगा ड्यूरिंग द एग्जाम. ऑल्सो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर नोट्स चाहिए या समझ नहीं आ रहा है कैसे बनाए, देन ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट ऑन दैट एंड आई विल शेयर विथ यू ऑल नोट्स ऑन दोज टॉपिक्स. ऑलराइट. So today I have got the topic, has the cherished goal of an integrated nation mentioned in the constitution been achieved? This is a polity topic जिस पे मैंने बहुत ही short note बनाया है, but आपको जब ये prelims perspective से it is not that important. It is important from the perspective of mains and maybe in the interview also, not maybe but it is important for the interview as well. So I have not written much here. It just only that much I have written, which you can understand, and this will, trigger a memory what you need to elaborate in the exam and how you need to write. तो बहुत ही short में लिखा है. But before starting the topic, I would request you all to please like, share and subscribe the channel. बिल्कुल time नहीं लगेगा. You just have to press those icons. But it will definitely help you and me and other aspirants who are lost and don't know how to go about preparing for the UPSC notes. कैसे बनाएं, आंसर राइटिंग कैसे करना है, कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है. You will get to know all these things from my notes. You will get these ideas from my notes. So let's start. So आप बताइए, आप कमेंट सेक्शन में आप पूरा वीडियो देखने से पहले आपको पॉज करना है और लिखना है, बताना है, हैज द चेरिश्ड गोल ऑफ एन इंटीग्रेटेड नेशन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बीन अचीव्ड. कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट. आर वी इंटीग्रेटेड नेशन, हैज इट बीन अचीव्ड? सो पॉज इट एंड राइट इट. नाउ व्हाट आई हैव रिटन, लेट मी शो यू. So what I have written in my notes is, see, despite, आपको ये तो पहले लिखना पड़ेगा what is integrated nation और constitutional provisions क्या है, preamble में mention किया गया, right? वो चीज़ें आपको पहले जब आप आंसर राइटिंग करेंगे वो यहाँ आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. So उसको लिखने के बाद and then you have to write why India is an integrated nation. Why do we say it is integrated nation? But it is ये एक critical, आपको इस क्वेश्चन को critical analysis करना है. So वो आपको कम लिखना है. The positives of like India is an integrated nation, उसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना है. You have to be critical of this statement. So what I've written here, despite the constitutional provisions. Now मैंने यहाँ पे इतना लिखा despite the constitutional provision because I remember the provisions, but what you have to write, आपको यहाँ पे कुछ provisions लिखने पड़ेंगे which makes India a integrated nation. Alright, जो कि integrated nation को directly indirectly होने में help करेगा. तो यहाँ पे वो constitutional provisions आपको लिखना पड़ेगा. For example, like despite the constitutional provision, for example this, A, B, C, like that. So despite the constitutional provisions for a single citizenship, see I've written, for a single citizenship and uniform rights for all the people. सभी के पास single citizenship है, uniform rights है. Then India has been witnessing the communal riots, alright, class conflicts, caste wars, linguistic clashes, ethnic disputes, regional disparities leading to regional discrimination.
अंडरस्टूड? कि हमारे पास इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, फिर भी इंडिया में ये सारी चीज़ें, these evils are still there despite it being mentioned we are integrated nation, is still there. Communal rights तो आए दिन कहीं ना कहीं होते रहते हैं. Class conflicts also there. Caste wars are very common, between lower caste and upper caste. We see how the people from certain castes, they flee their houses. The atrocities still happening. You need to be very neutral when you write UPSC exams or give answer. You have to shed your caste identity. India is a very caste society we are, whether we would like to accept it or not, we are. तो जब आप आंसर लिखते हैं और या फिर आप इंटरव्यू देते हैं तो आपको अपनी एक कास्ट आइडेंटिटी को पीछे एग्जामिनेशन हॉल्स के बाहर ही छोड़ के जाके आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी या इंटरव्यू में जवाब देना पड़ेगा. ऑलराइट, देन ओनली यू विल फेच अ गुड मार्क, अदरवाइज इट विल बी अ बायस्ड एंड यू विल नॉट बी गेटिंग गुड मार्क्स. यू विल बी जज्ड एज यू आर जजिंग others. Alright, so caste wars, linguistic classes भी बहुत होती हैं. We can see these things happening in the northeast states. Ethnic disputes are also there, between two tribes, different tribes. See what's happening in the Manipur. Regional disparities are there. Yes, regional disparities. Due to regional disparities, there are conflicts leading to regional discrimination. तो discrimination होता है, रीजनल डिस्पैरिटीज होती हैं. तो क्या हुआ, अब कोई रीजन जो बैकवर्ड है तो वहाँ पे दे आर अनेबल टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स. तो वो फर्दर दे आर अनेबल टू ग्रो देमसेल्व्स. जो रिच स्टेट्स होते हैं, दे अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेसेस एंड दे आर गोइंग फर्दर. तो रीजनल डिस्पैरिटीज ऑल्सो गेटिंग एनलार्ज. सो आर वी इंटीग्रेटेड? यस, वी आर इंटीग्रेटेड physically, but then there is a physical integration को भी तो challenge है. See what's happening in J&K, see what's happening in northeastern states. Physical integration को भी challenge है. China is claiming this places in Arunachal, and northeastern people, they want their own, own Nagaland, own places. So the independence kind of thing. So integrated, yes, we are integrated. We are not, we don't intend to get bifurcated, divided. We are integrated, but at the same time, these things, these conflicts or evils that's happening in this, those are happening in the society, in different regions, different parts of the countries. They are very great challenge to the integration of the nation. The people are on, we say na, unity in diversity. तो हमारी यूनिटी तो है ही है, दैट इज देयर, नो चैलेंज टू दैट. वी आर इंटीग्रेटेड एंड यूनाइटेड, बट देन एट द सेम टाइम वी आर नॉट इंटीग्रेटेड. थोड़ी सी कहते हैं ना, चिंगारी लगा दो तो आग लग जाती है, वो नहीं होना चाहिए. इट शोज देयर डीप डाउन विद इन अस वी आर ready to take on our own brothers and sisters, our own fellow citizens. So that feeling has to go away. We need to be very united. When the people in the heart are united, they don't discriminate with each other, then only the integrated nation का जो cherished goal है, जो constitution में mention है, that will be achieved. Otherwise आपस में लड़ते रहेंगे and the benefit factor will be the third party. So this means that the cherished goal of the constitution makers to build a united and integrated nation has not been fully realized. What does it mean? It has been realized but not fully realized. Alright, ये आप conclusion में लिख सकते हैं. तो bracket में मैंने छोटा सा एक ये लिख दिया है. This is not very much important, but अपनी understanding के लिए what I have written, let's read. In India, all citizens, irrespective of state in which they are born or reside, enjoy same political and civil rights all over the country and no discrimination is made between them. ये point आप कब लिखेंगे? जब आप अपना argument देंगे, yes, we are
यूनाइटेड। जब आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताएंगे तब आप ये लिखेंगे yes we are, this statement tells you, argues that yes we are very much united, India is very much integrated nation, this is the reason integrated and this is the reason why we are not integrated तो है but fully integrated जो dream है that has not been achieved because of conflicting opinions, conflicting interest of different sections, and we are so diverse, so that is why the conflict is also on a large scale and diverse. So this you need to write and you need to understand. तो आप इसको point wise भी लिख सकते हैं, like has it been achieved, yes, यहाँ पे एक सर्कल बनाइए, constitutional provision जो integrated करते हैं 1 2 3 4 and then constitutional provision which do not 1 2 3 4 like caste wars, this जो मैंने स्टेटमेंट में लिखा है, पैराग्राफ में लिखा है, उसको आप ऐसे एरो बना के पॉइंट में या चार्ट में लिख दीजिए एंड देन इन द एंड यू गिव योर कंक्लूजन, और उससे पहले यहाँ पे मेंशन कर दीजिए और क्या क्या चीज़ें होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या मेंशन है वो कर दीजिए. दैट इन दैट वे योर आंसर विल बी कंप्लीट. I wrote only this much in my note because it is there in my mind कि मुझे सिर्फ रिवाइज करने के लिए इतना ही चाहिए था, बाकी वो वहाँ मैं आंसर शीट में खुद से ही लिख दूंगी, इसलिए मैंने इसमें इतना ही लगाया. बट आपको अगर लगता है दिस मच यू विल नॉट बी एबल टू एग्जाम के प्रेशर में नहीं कर पाएंगे खुद से क्रिएट राइट, तो आप यहाँ पे नोट्स में ही ऐसे लगाइए, एक बॉक्स बनाइए या कुछ सर्कल बनाइए, चार्ट बनाइए और फिर ऐसे एरो करके आप लिख दीजिए कि ये चीज़ें हैं विच इज़ प्रोहिबिटिंग फ्रॉम फुल्ली रियलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन, दीज आर द पॉइंट्स विच शोज वी आर इंटीग्रेटेड, उसको भी ऐसे एरो करके एंड देन योर कंक्लूजन. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. Before signing off, I would request you all to please like, share and subscribe my channel. Like now, subscribe now, don't overthink, don't waste time. And see you in the next video. Till then, bye bye. Love you all.